Everybody join quickly. Hello, good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. If yes, write yes in the comment box. If I am audible, please write yes in the comment box. If I am audible, please write yes in the comment box so that I can start. I hope I am audible to you. Please use your earphones during the lecture. Yes, Saroj Nayak. Okay, yes. So we were discussing about the adverse drug reactions, and we have seen this part. We have seen what do you mean by side effect, what do you mean by untoward effect, what do you mean by toxic effect. We have also seen the intolerance, idiosyncratic. We have seen the different types of adverse drug reaction which are important for your upcoming GPAT Niper DI Pharmacist. In the detail, we have seen this. We have seen the classification also. We have seen in the details about the what do you mean by intolerance, what do you mean by idiosyncrasy, what do you mean by different type of hypersensitivity reactions. We have seen type 1, type 2, type 3, type 4 which are very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको प्रॉपरली करना है, राइट. So you have to remember. We have seen already in the last session. So you have to remember, right. We have also seen the mechanism how these adverse drug reaction develops mechanism, right. We have seen this type 1 known as a immediate type of hypersensitivity. In that immunoglobulin E is involved, so it is immunoglobulin E mediated hypersensitivity reaction, right. So known as anaphylaxis. Type 2 is known as autoallergy, right, or site. Type 2 is known as autoallergy. So that we have seen type 3 arthritis type of reactions, hypersensitivity reactions. After that we have seen the type 4 known as a cell mediated or delayed hypersensitivity. So mechanism is important, synonyms are important, types are important. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं बहुत सारे, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया है ना. टाइप 4 hypersensitivity reactions or type 4 allergic reactions are known as, they are known as the delayed or cell mediated allergic reactions. I have already told you examples, I have told you, right. Now next part is nothing but the one of the adverse reaction, one of the drug adverse reaction is nothing but the teratogenicity. So what do you mean by teratogenicity? One of the adverse drug reaction is nothing but the teratogenicity. It is a type of adverse drug reaction, teratogenicity, right. I have already explained you, but in a short. So today we'll see in the detail. So now we'll see in the detail about the teratogenicity. So teratogenicity क्या होता है, right? So teratogenicity is nothing but the kind of adverse drug reaction. So what happens in this? Just a minute. So hypersensitivity. Okay. So types of adverse drug reactions we was discussing. We have seen the different type of adverse drug reaction. We have seen the
hypersensitivity reactions. Now it's time to explain you what do you mean by teratogenicity. So teratogenicity, it is a kind of adverse drug reaction that particularly occurs in the pregnant woman. If drugs are given in the pregnant woman, they will adversely affect the fetus. That is known as a teratogenicity. If any type of drug which is given in the pregnant woman is able to produce some defects in the fetus, defect in the children to be born, that is known as a teratogenicity. Actually, the word teratogenicity was described by the Greeks. Teratogenicity. So this word is coming from two, okay, drug is coming from two words. Teratos. Teratos मतलब ये Greek word होता है. Teratos. Teratos in the Greek it means monster. Teratos means Greek in the monster. Teratos is the term for a monster. Monster मतलब क्या है, उसका फेस अलग रहता है ना, monster अलग ही दिखता है ना. So teratos means a monster. So drug which can cause teratogenicity, that leads to birth which will look like a monster. There is the one drug known as a thalidomide. Actually this thalidomide is a drug used in the, thalidomide was a drug used in the morning sickness in the pregnant woman. तो प्रेग्नेंट वुमन में जो मॉर्निंग में वोमिटिंग वगैरह या फिर नौशिया या फिर जो भी होता है, known as a morning sickness. So the thalidomide was used in the treatment of morning sickness in the pregnant woman in 19th century, you know, and later on it was observed that there was a thousands of birth which was a defective birth, you know, because of use of this thalidomide. Okay, irrational use of this thalidomide leads to thousands of defective birth like this. Now you can see over here. All these are known as a defective births. You can see over this in these images. So this children is born with the defective limbs. So this is, the children is not having proper development of limbs. So known as a absence of limbs or shortening of long bones. जो particularly जो long bones होते हैं हाथ के आपके या पैर के, so there is a shortening of these kind of bones, and that's why the children will look like a monster, and that's why teratos. The word comes from teratos. The teratogenicity comes from the word teratos. It is a Greek word which indicates the monster looking, right? So that's why this thalidomide was used in the pregnant woman for the morning sickness in the 19th century, but that resulted in a thousands of birth which are known as a defective birth, and from that onwards thalidomide was banned in the market. Thalidomide market में ban हो चुका है तब से. But thalidomide was a racemic mixture. What thalidomide was a? It was a racemic mixture. क्या था? Racemic mixture. Thalidomide was a racemic mixture. So it was having two isomers. First one is known as the S isomer, and second one is known as the R isomer. Thalidomide was a racemic mixture which was having two isomers. First one is R and second one is S. So out of that, this S thalidomide was teratogenic. Super question आ चुका है. Which isomer of thalidomide is a teratogenic? S isomer of thalidomide is a teratogenic, but R isomer is the same. Remember, thalidomide was a racemic mixture. It was observed later on that S isomer was responsible for the absence of limb, that is phocomelia. This thalidomide was used in the pregnant woman for the morning sickness that caused the thousands of defective birth, known as a phocomelia. So absence of limb, they are known as a phocomelia. In GPAT 2023, there was a question: phocomelia is the adverse effect of teratogenic effect of thalidomide. Which thalidomide will cause phocomelia? Remember, S isomer of thalidomide is a teratogenic, but R isomer is a safe, because thalidomide is a racemic mixture having S and R isomer in an equal quantity. So equal amount of R and S isomers are present in the thalidomide. So thalidomide is a racemic mixture.
So R isomer is safe, S isomer causes the phocomelia. S isomer causes the, remember, okay, right? I hope I am audible to you. You are getting the points. Now, I have already discussed this table with you. So, if any teratogenic drug is given in the first 2 weeks of pregnancy, so that period is nothing but the period of fertilization and implantation. So, in that period, if any pregnant woman takes any teratogenic drug, or if any pregnant woman prescribed a teratogenic drug, that can leads to miscarriage, है ना. अगर 2 वीक में, प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते में अगर कोई लेडीज ने ये टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया या फिर उससे डॉक्टर ने दे दिया, तो दैट लीड्स इन मिसकैरेज, मिसकैरेज हो जाएगा उसका, ठीक है. इफ इन अ पीरियड ऑफ 2 to 8 weeks if any pregnant woman takes a drug which can cause teratogenicity or it has been prescribed by a doctor, so what will happen? So 2 to 8 weeks is a period of organogenesis. इसमें सब ऑर्गन्स बनते हैं बच्चे के, राइट, ड्यूरिंग दैट पीरियड. So that leads to cleft palate defect, optic atrophy, mental retardation, neural tube defect. तो देखो, अगर 2 से लेके 8 हफ्ते या प्रेगनेंसी है, उसमें अगर प्रेग्नेंट वुमन ने कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया या फिर उसे डॉक्टर ने दे दिया, ये पीरियड किसका होता है? ये पीरियड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब इसमें ऑर्गन्स बनते हैं बच्चे के, ऑर्गन्स बनते हैं. अगर उस टाइम पे टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया तो क्लिप पेलेट डिफेक्ट मिलेगा. क्लिप पेलेट मतलब क्लिप्ड पेलेट डिफेक्ट. क्लिप पेलेट डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि देयर इज अ एबनॉर्मल लिप्स फॉर्मेशन, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ लिप्स, है ना. अपर लिप्स का एक वहाँ पे इसमें एक है ना कटिंग होता है. तो अपर लिप नॉर्मली एक ही होता है अपर लिप, है ना, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है उसमें ब्रेक होता है, उसमें कट होता है. सो दैट इज नोन एज क्लिप पेलेट. ऑप्टिक एट्रोफी मतलब अंधापन, ऑप्टिक एट्रोफी मतलब अंधापन, पूरा ब्लाइंडनेस हो जाएगा. मेंटल रिटार्डेशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. देन इफ ए ड्रग is given to a pregnant woman who is having pregnancy of 8 weeks or onward, 8 हफ्ते का प्रेगनेंसी है या फिर उससे ज़्यादा है, that period is for development and growth. So teratogenic drug can cause developmental and functional abnormalities in the fetus. So that is the teratogenicity, right? तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. We are going to see the list of teratogenic drugs. Don't worry, सिर्फ एक ही ड्रग नहीं है teratogenic, बहुत सारे ड्रग्स है, right? So that is the teratogenicity. So it is one of the adverse drug reaction. तो यहाँ पे phocomelia is the adverse effect of teratogenicity. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. phocomelia is the adverse effect of thalidomide. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. yes isomer causes the phocomelia but R isomer is the safe. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना. and this defect in a phocomelia caused by thalidomide in a thousands of children known as the thalidomide tragedy. इसको बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, राइट. सो दैट इंसिडेंस इज नोन एज द थैलिडोमाइड ट्रेजेडी बिकॉज इन थैलिडोमाइड वाज यूज्ड इन a pregnant woman for the morning sickness, but that resulted in the thousands of birth which is known as a defective birth, known as a phocomelic birth. That tragedy is known as a thalidomide tragedy, right. Now you can see drugs proven with the teratogenic effect in the humans. कौन से ड्रग्स में teratogenic effect होता है? You can see over here. So examples of drugs, na, drugs and teratogenic effect, drugs and teratogenic effect, drugs and teratogenic effect, right. So drugs and teratogenic effect respectively, right. Drugs with teratogenic effect, right. So first drug is a methotrexate. First drug is a methotrexate. First drug is a methotrexate. So methotrexate, you know that we have seen it is a drug used in the cancer. It is a anti-metabolite. Methotrexate क्या होता है? It is a drug used in the cancer. It is a anti-metabolite, right? अपन ने देखा है anti-metabolite. So what this drug can cause? This drug can cause what this drug can cause? It can cause CNS and limb malformation. तो आपका नर्वस सिस्टम, बच्चे का जो है नर्वस सिस्टम एंड लिम्स माल फॉर्मेशन करेगा, राइट. सो एज आई टोल्ड यू एट द प्रीवियस टाइम आल्सो, मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स दे आर teratogenic in nature. So methotrexate can cause CNS and limb abnormalities. Remember, another drug ACE inhibitors. Another drug category है
एस इनहिबिटर। एस मतलब क्या, इक्का नहीं, एस मतलब क्या, ताश का इक्का नहीं होता, एस मतलब क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। So it is one of the category of drug used in the hypertension. Okay, so the act on a renin angiotensin aldosterone system. So ACE inhibitor, इसमें सब प्रिल आता है, जैसे लिसोनोप्रिल, रेमिप्रिल है ना, पोसिनोप्रिल, देन आपका कैप्टोप्रिल है ना, इनाप्रिल, ऐसे कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लिसोनोप्रिल, पोसिनोप्रिल. So all kind of prils, they are known as ACE inhibitors. So what they do, prolong the use of these ACE inhibitors can cause renal failure in the neonates. रिनल ट्यूबुलर डिसजेनेसिस, मतलब जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन प्रॉपर बनेगा नहीं, रिनल ट्यूबुलर डिसजेनेसिस, राइट. देन डिक्रीज इन द स्कल ऑसिफिकेशन, मतलब आपका जो स्कल होता है वो प्रॉपरली स्ट्रेंथ नहीं आएगा उसमें, स्कल ऑसिफिकेशन. दीज आर द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स. नाउ नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है जैसे एट्रोपिन, प्रोपेंथैलिन, पायरेनज़ेपिन है ना, या स्कोपेलामाइन वगैरह. सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैन कॉज नियोनेटल मेकोनियम इलियस. मतलब क्या करेगा वो, नियोनेटल मेकोनियम इलियस मतलब क्या कि इसमें मूवमेंट नहीं होगा, जीआईटी का जो आपका इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे पेन होगा. दैट इज द नियोनेटल मेकोनियम इलियस. देन एंटीथायरॉयड ड्रग्स. एंटीथायरॉयड ड्रग्स दे आर आल्सो टेराटोजेनिक इन नेचर. दे कैन कॉज फीटल एंड नियोनेटल गोइटर, है ना, बच्चों में गोइटर करेगा. हाइपोथायरॉयडिज्म, एप्लासिया कटिस, है ना, एप्लासिया कटिस, इसे इनके टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट ड्रग इज कार्बामेज़ेपिन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज द टेराटोजेनिक ड्रग, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपिन. तो कार्बामेज़ेपिन इज अ ड्रग यूज्ड इन द साइकोसिस. ये क्या है, कार्बामेज़ेपिन क्या है, इट इज सीएनएस डिप्रेशन ड्रग एंड इट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. तो बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली नहीं बनता, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनेगा तो उसमें मेंटल इलनेस आएगा, उसमें उसमें पूरा मतलब उसका बॉडी कंट्रोल नहीं होगा, राइट, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज अ न्यूरल ट्यूब एंड दैट कंट्रोल्स द लॉट ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आता है आपकी बॉडी में. मिसोप्रोस्टॉल इज अगेन ए ड्रग यूज्ड इन द, है ना, यूज्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. मिसोप्रोस्टॉल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. So it causes the Mobius sequence. It is a kind of one adverse effect. It is a teratogenic effect. Mobius sequence. Mobius sequence. तो ये क्या होता है? If you want to read, you can search on Google and you will read. Mobius effect, right? So that is a teratogenic effect of misoprostol. Then one of the drug is known as the warfarin. It is the anticoagulant. अभी ये अपना जनरल फार्माकोलॉजी होने के बाद में हम लेंगे blood, then coagulant, anticoagulant. Okay, so warfarin is a anticoagulant, right? So warfarin also is a teratogenic in nature. It causes the skeletal and CNS defect. Then Dandy-Walker syndrome, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Dandy-Walker syndrome is a teratogenic effect of. So it is a teratogenic effect of warfarin. तो warfarin Dandy-Walker syndrome करता है बच्चों में. अगर warfarin प्रेग्नेंट वुमन में दे दिया तो that can result in the skeletal CNS defect in the fetus and also can cause Dandy-Walker syndrome. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. वेल्पोरिक एसिड. वेल्पोरिक एसिड क्या है? वेल्पोरिक एसिड इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर epilepsy. Sodium valproate. So valporic acid is a teratogenic drug. It causes the neural tube defect. Neural tube defect. Again याद रखना है आपको, वेल्पोरिक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, है ना, वेल्पोरिक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, दे कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ठीक है. इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग. एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग होता है. When we'll see the epilepsy drug acting on CNS, so at that time I will explain. Next drug is a trimethadione. Trimethadione. Again, it is a drug which can cause malformation of ear, clip, palate defect, cardiac and urogenital skeletal defect. तो ये सब when drug they are used in the pregnancy, they can lead to these defect in the fetus. तो आपका यहाँ पे देखो थैलिडोमाइड फिर से आ गया. ये थैलिडोमाइड आपका पीछा नहीं छोड़ता. What is thalidomide? Again, drug used in the morning sickness. Was used nowadays? It is not used nowadays. Thalidomide is a orphan drug. याद रखना है, thalidomide क्या होता है? Orphan drug. So in the cancer also thalidomide is used. In few cancerous cell, thalidomide is used, right?
Now next, thalidomide causes the limb shortening and internal organ defects known as a phocomelia, right? GPAT 2024-23 में क्वेश्चन आ चुका है, GPAT 23 में क्वेश्चन आ चुका. Now next one is cyclophosphamide. Cyclophosphamide is an anti-cancer drug. आपने देखा है cyclophosphamide is an anti-cancer drug. So it can cause CNS malformation and secondary cancers. That is a teratogenic effect of teratogenic effect of cyclophosphamide. Next drug होता है आपका lithium. Lithium is a drug used in the psychosis. Lithium carbonate use किया जाता है. That can cause Epstein anomaly. It is one of the teratogenic effect. Epstein anomaly. So आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, बॉस कौन सा ड्रग है और उसका teratogenic effect कौन सा है. Drugs and their teratogenic effect, right? So क्वेश्चन कहाँ पे आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, right? तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ए सिंगल है ना, teratogenic ड्रग. देन इसके ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, है ना, एंटी थायराइड ड्रग का, कार्बामेज़ेपिन, है ना. देन वेल्पोरिक एसिड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वेल्पोरिक एसिड. देन डैंडी-वाल्कर सिंड्रोम इज अ इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, इसके ऊपर आ चुका है ना. थैलिडोमाइड के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लॉट ऑफ टाइम्स दे ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन थैलिडोमाइड. देन है ना, लिथियम का भी एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है. दैट मीन्स दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दे ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. देखो नेक्स्ट ड्रग है NSAIDs. So NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drug. So they can also cause the constriction of ductus arteriosus. अभी ये ductus arteriosus क्या होता है, देखो मान लीजिए ये बच्चे का क्या है, हार्ट है. ये बच्चे का क्या है, हार्ट है. बच्चे का हार्ट ऐसा नहीं होता, बच्चे का हार्ट शेप ऐसा नहीं होता, बट ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो योर हार्ट हैज अ 4 चैम्बर्स, है ना. ये क्या है, लेफ्ट, है ना. ये क्या है, राइट एट्रियम. ये क्या है, राइट वेंट्रिकल. ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम. ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. तो यू हैव 4 चैम्बर्स इन हार्ट. आप जब आपके माता जी के पेट में होते हो, व्हेन चाइल्ड इज इन अ वूम्ब ऑफ मदर, तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वहां पे वो सांस तो नहीं ले सकता ना. बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो सांस नहीं ले सकता, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा. सो हाउ ए फीटस विल गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो क्या होता है कि व्हेन, है ना, व्हेन चाइल्ड इज इन अ वोम, है ना, सो देयर इज वन स्मॉल artery that supplies the oxygenated blood. So one artery is there which supplies the oxygenated blood to the fetus. एक मदर से लेके एक मदर में, है ना, from a mother there is one artery, there is one artery which carries oxygenated blood to the left atrium of the fetus. लेफ्ट एट्रियम में, है ना, लेफ्ट एट्रियम में मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो उसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस. क्या बोलते हैं उसको, डक्टस आर्टियोसस. There is one artery which carries a oxygenated blood in the fetus because fetus is not able to breathe. fetus breathe नहीं कर सकता, तो उसको एक्सेस, है ना. नॉर्मली क्या होता है, आपका हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता है किसको, लंग्स को, है ना. सो होल ब्लड फ्रॉम योर बॉडी इज कैरीड बाय लेफ्ट, है ना, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा. दैट ब्लड इज ट्रांसमिटेड टू डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड विल गो टू द लंग्स, एंड लंग्स, इन द लंग्स देयर इज अ ब्लड प्यूरिफिकेशन. लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है नॉर्मली, एंड दैट ब्लड कम्स टू लेफ्ट auricle and then from that left ventricle, and from left ventricle blood will go to the all body. But you are in a mother's womb. आप जब माँ के पेट में होते हो तो आपके लंग्स कैसे काम करेंगे, आप सांस नहीं ले सकते ना. यू आर इन अमनियोटिक फ्लूइड,
तो वहाँ पे क्या होता है कि टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर्स ब्लड, तो मदर का जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको बच्चे को बच्चों को सप्लाई किया जाता है वाया डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये डक्टस आर्टरियोसिस है, मतलब क्या है ना, there is one small artery which supplies the oxygenated blood to the fetus directly into the left auricle। तो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बच्चे के बाकी पार्ट को जाएगा, राइट। नाउ दैट इज नोन एज डक्टस आर्टरियोसिस एंड इट इज अ स्मॉल आर्टरी। अब जब आपका बर्थ होता है, व्हेन यू आर डिलीवर्ड बाय मदर, व्हाट हैपेंस, दैट डक्टस आर्टरियोसिस इज ब्रोकन डाउन एंड दैट शुड बी इमीडिएटली क्लोज्ड। तो ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होना चाहिए, है ना, ये डक्टस आर्टरियोसिस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तब जाके आपको पूरा बर्थ होने के बाद में आपका सर्कुलेशन आएगा, राइट। समटाइम्स दिस डक्टस आर्टरियोसिस इज नॉट क्लोज, समटाइम्स ये क्लोज नहीं होता है एंड दैट इज नोन एज अ होल इन द हार्ट। आपने देखा होगा बोरिस न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स दे आर एडवर्टाइजिंग कि अगर बच्चे के हार्ट में छेद है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ होल, इट इज नथिंग बट द दैट आर्टरी, है ना, जो मदर से आपके लेफ्ट ऑरिकल में एक आर्टरी आता है फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ इफ आफ्टर द बर्थ इफ दैट आर्टरी इज ओपन, दैट इज नोन एज डक्टस आर्टरियोसिस, इट शुड बी क्लोज्ड, ये आपका बंद होना चाहिए बर्थ के बाद में। अगर ओपन रहता है तो उसको ऑपरेशन करके करेक्ट करना पड़ता है, दैट्स इट, इतना सिंपल होता है ना। नहीं तो क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Right? I hope I am audible to you. चेतन जैन कौन है? कौन है चेतन जैन? So if there is a opening of this artery remains open, that is known as ductus arteriosus, and that is closed by surgical operation or by using drugs, है ना। But some drugs are there like NSAIDs, है ना, they causes the जैसे आपका यहाँ पे NSAIDs में एक एग्जांपल है आपका, है ना, इंडोमिथासिन, is one example known as indomethacin, is one example known as aspirin. Aspirin, indomethacin, these two drugs, they causes the constriction of ductus arteriosus, premature constriction of ductus arteriosus। अगर आपके प्रेग्नेंट वुमन में NSAID या फिर NSAID में से एस्पिरिन या फिर इंडोमिथासिन दिया, इंडोमिथासिन एस्पिरिन इन द प्रेग्नेंट वुमन causes the constriction of ductus arteriosus and that's why a fetus will not get a proper blood, oxygenated blood, okay? So that is known as a constriction ductus arteriosus, है ना। अगर बाद में बाय बर्थ ये ओपन हो चुका है, ओपन रह गया, क्लोज होना चाहिए, है ना, मतलब NSAID प्रेग्नेंट वुमन में दे दिया तो डक्टस आर्टरियोस का कंस्ट्रिक्शन करेगा, फिटस को एबनॉर्मली अफेक्ट करेगा, ठीक है। बट अगर फिटस का अगर बाय आफ्टर बर्थ अगर ये डक्टस आर्टरियोस ओपन रहता है तो टू क्लोज द डक्टस आर्टरियोस इंडोमिथासिन इज यूज्ड, ठीक है, या फिर अगर ड्रग से होता है तो ड्रग से करते हैं या फिर अदरवाइज आपका सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। सो कंस्ट्रिक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोस नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो व्हाट आर द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ NSAID in the pregnant woman that can leads to constriction of ductus arteriosus and also that can cause necrotizing enterocolitis, right? Now oral hypoglycemic drugs, क्या है? Oral hypoglycemic drugs, है ना, oral hypoglycemic drugs। हेलो, oral hypoglycemic drugs, तो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, व्हाट दे विल डू, एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे विल कॉज नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो एंटी डायबिटिक ड्रग अगर प्रेग्नेंट वुमन में दे दिया तो बच्चे का ब्लड शुगर लेवल कम करेगा, दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड दे कैन एडवर्सली अफेक्ट द fetus. So oral hypoglycemic drug are teratogenic in nature. Okay? Psychoactive drug or drug used in the psychosis, for example, है ना, वो सारे ड्रग्स होते हैं, दे कैन कॉज न्यूनेटल विड्रॉल सिंड्रोम इफ यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन। फिनिटोइन आपका जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है, फिनिटोइन इज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग दैट कैन कॉज ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सीनेस डिफेक्ट इन द fetus. अगेन नेक्स्ट ड्रग है डाइएथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल, इट इज अ हार्मोनल ड्रग which causes the vaginal carcinoma,
vaginal carcinoma and other genitourinary defect in the female and male fetus. ये diethyl stilbestrol is used in the pregnant woman. It can cause vaginal carcinoma in the female fetus, genitourinary defect in the male fetus, right? Then again danazol and other androgenic drug. ये हार्मोनल ड्रग होते हैं, एंड्रोजेनिक ड्रग. danazol and other androgenic drug, they can cause masculization of female fetus. तो अगर danazol यूज किया प्रेगनेंसी में, अगर फीमेल fetus है, मतलब अगर लड़की है पेट में, तो वो लड़की को मैस्कुलाइजेशन करेगा, मतलब मेल की कैरेक्टर इम्प्लांट करेगा, राइट. तो danazol and other androgenic drug, they are teratogenic and they can cause, है ना, मैस्कुलाइजेशन इन द fetus. ओके, सिंथेटिक रेटिनॉइड्स जैसे, है ना, आइसोट्रिटिनोइन, ये सिंथेटिक विटामिन ए होता है, दैट कैन कॉज सीनस एंड क्रेनियोफेशियल कार्डियोवास्कुलर एंड अदर डिफेक्ट. tetracyclines are also teratogenic in nature. They can cause both teeth and bone abnormalities. Teeth and bone abnormalities, there is a malformation of bones and teeth by the teratogenic effect of a tetracycline. तो आपको एक शॉर्ट में याद रखना है, what are the examples of drug, teratogenic drug. तो what are the examples of teratogenic drug याद रखना है आपको. जैसे A है ना, ABC होता है. A मतलब क्या? A मतलब एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक कौन सा है भाई? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है. A फॉर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, A फॉर एंटीबायोटिक तो टेट्रासाइक्लिन का है. A फॉर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, है ना. एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कौन सा है आपका? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में आना है आपका वेल्पुरिक एसिड, है ना, वेल्पुरिक एसिड, देन कार्बामाजेपिन, देन फिनिटोइन. याद कैसे रखना है? देखो ABCD, है ना. A फॉर एंटीबायोटिक कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकोल एंड, है ना, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे कॉजेज द टेराटोजेनिक इफेक्ट, है ना. एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन्स, देन क्लोरामफेनिकोल and this your aminoglycosides as well as sulfonamides. ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स which causes the teratogenicity. A for anti-epileptic drug, तो उसमें क्या है? वेल्पुरिक एसिड, है ना, कार्बामाजेपिन, फिनिटोइन, है ना, all these can cause teratogenic effect. ठीक है ना. A हो गया, ठीक है. बाद में याद रखना है सभी हार्मोनल ड्रग्स normally A for anti-epileptics, A for antibiotics, A for anti-cancer drugs. तो anti-cancer drug जो होते, all anti-cancer drugs are teratogenic in nature. तो ये आपको याद कैसे रखना है, वो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ. all anti-cancer drugs are teratogenic in nature. then बाद में anti-cancer drugs, anti-epileptic drugs, then antibiotics, they can cause teratogenicity. ठीक है. बाद में क्या है कि H किसके लिए बोला था मैंने? H मत, है ना, H फॉर हार्मोन्स. तो हार्मोन्स आर नथिंग बट द टेराटोजेनिक इन नेचर. AH, है ना, ट्रिपल A, एंटीबायोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी कैंसर एज वेल एज एंटी कोएगुलेंट. एंटी कोएगुलेंट कौन सा आता है? एंटी कोएगुलेंट में आता है वारफेरिन, है ना, वारफेरिन. तो देखो A वर्ड याद रखो, एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी कोएगुलेंट, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी कोएगुलेंट, एंटी कैंसर एंड देन, है ना, बाद में NSAID. यहाँ पे याद रखना है NSAID में एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी डायबिटिक. यहाँ पे A फॉर एंटीबायोटिक्स, A फॉर एंटी इपिलेप्टिक, A फॉर एंटीकोएगुलेंट, A फॉर एंटीसाइकोटिक, A फॉर, है ना, A फॉर आपका एंटी डायबिटिक्स ऑल्सो. तो इतने सारे ड्रग्स जो ना वो टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं. मोस्टली ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स, है ना, ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स आर टेराटोजेनिक. तो A एक वर्ड जो है ना, A, है ना,
ए से ही आपको याद रखना है बहुत सारा, है ना। तो मतलब एंटी कैंसर ए ड्रग है, ए, है ना, ए से ही आपका सब टेराटोजेनिक ड्रग्स याद रखना है, ठीक है। मोस्टली ए फॉर क्या आता है, ए फॉर एंटीबायोटिक, ए फॉर एंटीबायोटिक। तो उसमें कौन सा एंटीबायोटिक है भाई, टेट्रासाइक्लिन है, उसमें क्लोरामफेनिकोल है, उसमें सल्फोनामाइड्स है, उसमें आपका है ना सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, है ना, उसमें आपका उसका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, सल्फोनामाइड्स, है ना, क्लोरामफेनिकोल। So these kind of antibiotics they can cause teratogenicity, which can cause teratogenicity. बाद में all anti cancer drugs, all anti cancer drug, तो उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड आएगा, या फिर जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है दे आर ऑल आर टेराटोजेनिक नेचर। उसके बाद में एंटी कोएगुलेंट आएगा वारफेरिन, एंटी कोएगुलेंट क्या आएगा, वारफेरिन, ठीक है ना। एंटी कैंसर ड्रग सब आएगा। वही आपका एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मतलब एंटी, है ना, उसमें आएगा आपका एंटी इपिलेप्टिक, इपिलेप्टिक में आएगा आपका फिनिटोइन, कार्बामाइजेपिन, वेल्प्रिक एसिड। तो एंटी इपिलेप्टिक में फिनिटोइन, कार्बामाइजेपिन एंड वेल्प्रिक एसिड, फिनिटोइन, कार्बामाइजेपिन, वेल्प्रिक एसिड, है ना। वही, है ना, एक ही ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब क्या, एनएसएआई, इसमें एस्पिरिन आएगा, आपका इंडोमिथिसिन आएगा, ये क्या करता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट करता है। एंटी साइकोटिक्स में आपको, जैसे एंटी साइकोटिक्स में कार्बोमाइजेपिन आता है, या लिथियम कार्बोनेट आता है, एंटी साइकोटिक्स में लिथियम कार्बोनेट आता है। एक ही ड्रग से ए फॉर एंटी, एंटी क्या, फिर एंटीबायोटिक्स भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी कोएगुलेंट भी है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है ना, एंटी साइकोटिक्स भी है। तो इससे आपको एग्जाम्पल से याद रखना है ड्रग्स के। देन आपका आता है हार्मोन्स, हार्मोनल ड्रग्स, है ना। हार्मोनल ड्रग्स एंटी इपिलेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी कोएगुलेंट, एंटी साइकोटिक्स, राइट, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब क्या है, एनएसएआईडी, है ना, एंटी डायबिटिक मतलब, है ना, एंटी डायबिटिक। तो ये सब ए से ही याद रखना है आपको, इतने सारे ड्रग्स है दैट कैन कॉज टेराटोजेनिसिटी, तो इजी है याद रखने के लिए। आई होप आई एम ऑडिबल एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, है ना, ऑल द टेबल्स आई हैव कलेक्टेड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अपकमिंग जीपैट नाइपर डीआई फार्मेसी। तो मैंने इसके एग्जांपल आपको प्रॉपरली सभी एग्जांपल्स बोला है, ड्रग विच आर टेराटोजेनिक इन नेचर, ड्रग विच आर टेराटोजेनिक इन नेचर, याद रखना है यहाँ पे, है ना। एग्जांपल देखो, थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, सोडियम वेल्प्रोरेट, फिनिटोइन, कार्बामाइजेपिन, फिनोबार्बिटॉन, लिथियम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, है ना। मतलब ये सब क्या है, हार्मोनल ड्रग्स, इतने सारे ये सब क्या है, हार्मोनल ड्रग्स, ना, ये सब ऑल दीज आर हार्मोनल ड्रग्स। प्लस एंटी थायराइड ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, है ना, एंटी इपिलेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, ये सब उसमें आता है। ऑल दीज आर द टेराटोजेनिक ड्रग्स, है ना। देन प्रोड्रग्स के एग्जांपल मैंने बोला था आपको, प्रोड्रग्स जैसे लिवोडोपा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, लिवोडोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामाइन, है ना। प्रेग्निसोलोन इज कन्वर्टेड टू प्रेग्निसोन इज कन्वर्टेड टू प्रेग्निसोलोन। प्रेग्निसोन क्या है, इट इज अ प्रोड्रग, एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, प्रेग्निसोलोन। इनएप्रिल का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, इनएप्रिल है, ये ऑलरेडी अपना हो चुका है। डिकम्पेसिन, एम्प्लिसिन, कॉर्टिजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। कॉर्टिजोन इज कन्वर्टेड टू, cortisone is an active drug converted into active metabolite hydrocortisone, है ना। As a thiopurine that is converted into markaptopurine. Cyclophosphamide is a converted into aldophosphamide. Okay. Zidovudine का active metabolite है zidovudine triphosphate. Zidovudine क्या है, drug used in the and treatment of HIV virus, है ना। तो देखो, ठीक है, drug with the which are having long half life, कोई ड्रग है एग्जांपल, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, लॉन्ग होता है, जैसे क्लोरोक्विन हैज 10 to 24 डेज, है ना। क्लोरोक्विन इज अ ड्रग यूज्ड इन द मलेरिया व्हिच कैन रिमेन इन द ब्लड फॉर 10 to 24 डेज, 10 से लेके 24 दिन तक ये ब्लड में रिस्क, ठीक है। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, एंड इसका पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लोरोक्विन, वहां पे मैंने बोला भी है 1600 लीटर। एंटेरासेप्ट का 3 to 4 डेज, फिनाइलबिटोजोन फॉर 3 to 4 डेज, मेफ्लोक्विन 16 to 24 डेज,
अगेन इसका भी टी आप बहुत ही लंबा होता है. मेफ्लोक्विन इज ऑल्सो ड्रग यूज इन द मलेरिया. गोल्ड सॉल्ट का होता है अराउंड 7 days. गोल्ड सॉल्ट किसमें यूज करते हैं? गोल्ड सॉल्ट आर यूज इन द आर्थराइटिस एंड काउट. एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग हैविंग लो सेफ्टी ऑफ मार्जिन मीन्स क्या? एग्जाम्पल ऑफ ड्रग हैविंग नैरो थेरापेटिक इंडेक्स कौन सा है भाई? डिगोक्सिन, लिथियम कार्बोनेट, थियोफाइलिन, क्विंडिन. ऑल दे आर द ड्रग हैविंग नैरो थेरापेटिक इंडेक्स. नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, इनका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है ना. टेबल्स इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट टेबल्स मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट. नाउ ड्रग्स नॉट यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन एंड ब्रेस्ट फीडिंग. ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टिंग ऑन. जो माता जी आपके बच्चे अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें कुछ ड्रग्स नहीं देना है, बिकॉज दीज ड्रग्स दे आर secreted in the milk. जैसे antibacterial drugs when they are given in the mother breastfeeding mother, so they are secreted in the milk and they can adversely affect the fetus. So antibacterial like sulfur drugs, tetracycline, chloramphenicol, है ना, DNA gyrase inhibitor, then isoniazid, erythromycin. So all these drugs they are secreted in the milk or excreted in the milk and they can adversely affect the fetus. है ना. तो इन्फेक्शन माता जी को हुआ है, बच्चों को नहीं, है ना. तो जब माता जी आप, है ना, इन्फेक्शन इज देयर फॉर अ मदर नॉट टू ए fetus, है ना. बट यू आर यूजिंग मेडिसिन इन द fetus, so you are using medicine in the mother, so mother will feed to the fetus, right? So what happens, some antibiotics they are released in the milk, जैसे tetracyclines हो गए आपका, chloramphenicol, nitric acid, isoniazid, erythromycin, sulfonamide. So what happens, you are giving this drug to the mothers, but through a milk that drug is going to that drug is going in a body of fetus. So ड्रग आप मदर के लिए दे रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो ड्रग अल्टीमेटली दूध के थ्रू कहाँ पे जा रहा है? बच्चे में जा रहा है. सो दैट्स व्हाई दैट कैन अफेक्ट एडवर्सली टू द fetus. So that's why these drugs are not recommended, they are not used in a breastfeeding and lactating women. So antibiotic जैसे कुछ एनाल्जेसिक्स है, some analgesic antibiotic drugs they are also not used in the pregnant woman, जैसे इंडोमिथासिन, फिनाइलब्यूटाजोन, एस्पिरिन हो गया, ओपोइडल एनाल्जेसिक हो गए. देन सम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स व्हिच आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग वुमन. So diazepam, lithium carbonate. So antihypertensive also, like rezapine, clonidine, they are not used. Anti-thyroid drug like uracil, methimazole, carbimazole, radioactive, they are also contraindicated because they can adversely affect the fetus. Anti-neoplastic मतलब anti-cancer drugs, so like amantadine, cimetidine, anthraquinones, amiodarone, ipedrine, aminopyrin, vitamin D. All these drugs they are not indicated in the pregnant, okay, in the lactating mother or breastfeeding mother, है ना. जो बच्चे को दूध पिलाती है ऐसी माँ, उनमें ये ड्रग नहीं देना है. क्यों नहीं देना है? ये ड्रग क्या है, मिल्क में रिलीज होंगे और मिल्क के थ्रू बच्चे में जाएंगे और उनको एडवर्स इफेक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई ड्रग नॉट रिकमेंडेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेटिंग मदर्स, राइट. तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल एंटीडोट, है ना. क्या लिखा है भाई? यूनिवर्सल एंटीडोट. सो एंटीडोट किस में यूज करते हो आप? पॉइजनिंग में. सो एंटीडोट, ओके. नाउ इफ यू डोंट नो द नेचर ऑफ पॉइजन, अगर आपको पॉइजनिंग किसका हुआ है वही मालूम नहीं, तो एंटीडोट कौन सा देंगे, राइट. सो इन केस ऑफ पॉइजनिंग वेयर यू डोंट नो द पॉइजन, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज यूनिवर्सल एंटीडोट. सो ये क्यों आया? मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एंशिएंट टाइम, है ना, पिछले ज़माने में मोस्ट ऑफ द पॉइजनिंग क्यों होता था? पिछले ज़माने में मोस्ट ऑफ द पॉइजनिंग होता था प्लांट की वजह से. मतलब लोगों को मालूम ही नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी पत्ते दिखे वो लेके खाते थे. जैसे मान लीजिए कोई पुराने ज़माने में जंगल में गया तो वहाँ पे धतूरा का प्लांट है, धतूरा मेटल, तो धतूरा का प्लांट है और उसके पत्ते ले लिए, उसका फ्रूट ले लिया, खा लिया, वो मर गया.
है ना. So most of the poisoning in the previous in the ancient time was happening due to the alkaloids, right? So that's why doctors they discovered this universal antidote. So what is that universal antidote? If the nature of poison is unknown, so you have to use universal antidote, and it is nothing but it consists of two parts of what? Two parts of activated charcoal, है ना. यूनिवर्सल एंटीडोट में दो पार्ट्स क्या रहेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल रहेंगे, है ना. यूनिवर्सल एंटीडोट विल हैव टू पार्ट्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, one part of tannic acid and one part of magnesium carbonate, magnesium oxide. तो यहाँ पे यूनिवर्सल एंटीडोट का कंपोजिशन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं. तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट? सो इन अ two parts of activated charcoal, one part of tannic acid and one part of magnesium oxide. Now why activated charcoal? So what is the role of activated charcoal in the universal antidote? तो चारकोल का रोल क्या होता है? तो चारकोल विल unabsorb poison from your stomach. तो मान लीजिए आपने धतूरा का प्लांट खा लिया, पत्ते खा लिए, तो अभी जितना एब्सॉर्ब हो चुका है पॉइजन, एट्रोपिन वगैरह, तो वो तो ठीक है. जो नहीं एब्सॉर्ब हो चुका है वो आपके पेट में है, तो एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाएगा आपको. एक्टिवेटेड चारकोल विल एब्सॉर्ब अनएब्सॉर्ब अल्कलॉइड्स फ्रॉम द स्टमक, है ना. सेकंड होता है आपका टैनिक एसिड. व्हाट इज द रोल ऑफ टैनिक एसिड? तो टैनिक एसिड, यू नो दैट यू माइट हैव सीन द फार्माकोग्नोसी. टैनिक एसिड टेस्ट होता है किसके लिए? अल्कलॉइड्स के लिए. तो टैनिक एसिड विल प्रेसिपिटेट द अल्कलॉइड्स. टैनिक एसिड कैन प्रेसिपिटेट द अल्कलॉइड्स, therefore it is used in the alkaloid poisoning in a universal antidote. And third part होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. तो मैग्नीशियम आयन क्या करता है? मैग्नीशियम आयन विल कॉज अ डायरिया. डायरिया होगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी आपके पेट का कचरा बाहर निकलेगा, है ना. अंदर का कचरा बाहर कौन करता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दे आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट. यूनिवर्सल एंटीडोट इज नथिंग बट द एंटीडोट व्हेन देयर इज अ, if you are not knowing the nature of poison, if nature of poison is unknown, you have to use universal antidote. It consists of two part of activated charcoal, one part of tannic acid, one part of magnesium oxide. So role of activated charcoal and tannic acid is important. क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके हैं, मैं अभी ईयर नहीं बोलूंगा, 2-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट. नेक्स्ट पार्ट, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज अ ड्रग टॉलरेंस. नेक्स्ट पार्ट होता है आपका ड्रग टॉलरेंस, है ना. जनरल फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स अभी तक कम से कम 13 लेक्चर्स हो चुके हैं. तो इतना लेक्चर्स कोई लेता नहीं है जनरल फार्माकोलॉजी, बट मैं लेता हूँ. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते हैं, और 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके तीन में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके जीपैट में, नाइपर में तो ज़्यादा, है ना. बाकी एग्जाम में भी कवर हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग जनरल फार्माकोलॉजी लेंदी, है ना. 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं अपने. 13 लेक्चर्स आर देयर ऑन ओनली वन पार्ट, जनरल फार्माकोलॉजी. क्यों? बिकॉज दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट इज अ ड्रग टॉलरेंस. नेक्स्ट पार्ट इज अ ड्रग टॉलरेंस, है ना. ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुके हैं. ड्रग टॉलरेंस, drug tolerance means what? When drug is used repeatedly, okay, when drug is used repeatedly, so response to that drug is decreased. अगर आपने कोई ड्रग रिपीटेडली यूज किया, है ना, रिपीटेडली यूज किया तो उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है. दैट इज नोन एज अ टॉलरेंस. So if drug is used repeatedly, the response to that drug is decreased by your body. That is known as a tolerance. Okay. And now to get a response, you need a large dose. तो इनिशियली मान लीजिए, है ना, इनिशियली मान लीजिए आपने क्या किया, आपके दोस्तों ने आपको फर्स्ट टाइम आपको अल्कोहल पिलाया. मान लीजिए आपको वाइन पिलाई, है ना. फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ 20 ml लिया. फर्स्ट टाइम आपने 20 ml वाइन पी, तो आपको कुछ डिजायर्ड इफेक्ट मिला. मतलब आपको कुछ, है ना, आपको रिलैक्सेशन मिला, या फिर आपको कुछ बहुत अच्छे सा फीलिंग आता है, मतलब यूफोरिया. तो इनिशियली यू टेक a 20 ml अल्कोहल, यू डेवलप
सिम्टम्स लाइक यूफोरिया एंड ऑल दैट, तो आपको अच्छा लगा। लेकिन अगर 20 ml आपने 2-4 दिन 2-4 बार पिया, तो नेक्स्ट टाइम जब पियेंगे 20 ml से कुछ नहीं होगा आपको, 20 ml से कुछ नहीं होगा, आपको 30 ml लगेगा। जब 30 ml लेंगे तब आपको कुछ ना कुछ किक मिलेगा, है ना। बट 30 ml आपने अगर कुछ 8-10 दिन पी लिया, उसके बाद में 30 ml से कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 90 ml, तो 90 ml से आपको इफेक्ट मिलेगा, डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बट आपने अगर 90 ml भी 15-20 दिन या फिर आपने पीते हो, तो 90 ml से कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 120 ml। दैट मीन्स देर इज इंक्रीज इन द डोज। ओके, सो इफ लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, if large dose of drug is required to elicit the effect that is normally produced by normal therapeutic dose, normally 20 ml अल्कोहल भी नॉर्मल पर्सन में इफेक्ट दिखाएगा, बट जो एडिक्टेड है उसमें कुछ नहीं होगा। मतलब जो डेली अल्कोहल पीते हैं उनको 20 ml 30 ml से या फिर 1 पैक से क्या होगा, है ना। इनिशियली वो 1 पैक से चालू करते हैं, बाद में कम से कम क्वार्टर लगाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, बहुत डोज ज्यादा लग रहा है उनको डिजायर्ड इफेक्ट के लिए, राइट। सो इफ लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिसिट ए पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल थेरेपेटिक डोज, नाउ दैट इज नोन एज द ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस, है ना। आपने क्या किया, आपने आज मॉर्फिन ले लिया 10 mg, तो आपको एक डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिला, है ना। तो ऐसा मॉर्फिन यूज कर रहे हो आप, तो 10-12 दिन के बाद में 10 mg से आपको कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 20 mg, तो 20 mg से इफेक्ट मिला, उसको यूज किया आप 10-15 दिन के बाद में 20 mg से भी कुछ नहीं होगा, यू नीड अ 30 mg, तो यू नीड अ larger dose to get that desired effect. So what happening, so your body is becoming tolerant to that drug. So drug tolerance means what, drug tolerance means what, if large dose of drug is required to elicit a particular effect which is normally produced by therapeutic dose of drug, so now that is known as tolerance, है ना, that is known as tolerance, right, है ना। repeated use of drug, your body will become a tolerant to that drug. Now that tolerance may be either natural tolerance or acquired tolerance. Natural tolerance or acquired tolerance. Natural tolerance मतलब क्या है, natural tolerance मतलब क्या है, natural tolerance मतलब क्या है कि अगर आपके माता पिता ही पहले से ही ड्रिंक करते हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी होता है ना। तो आपके जीन से आपको आया है ना, आपके जीन में ही है। जैसे होता है ना, आप बोलते हो मारवाड़ी अगर बिजनेस करता है तो उसका बच्चा बिजनेस ही करेगा, क्यों, उसके जीन्स में है ना, आप बोलते हो जीन्स में है उसके, है ना। नेचुरल टॉलरेंस मतलब क्या है, तो दैट इज गिवन बाय बिकॉज ऑफ द नेचर। एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस मतलब क्या है, दैट इज एक्वायर्ड मतलब दैट इज ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स। तो नेचुरल टॉलरेंस एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस, फॉर एग्जाम्पल सम स्पेसीज, कुछ स्पेसीज होते हैं जैसे यहाँ पे तो, है ना, सम, है ना, जैसे ह्यूमंस है, अपन ह्यूमंस में एट्रोपिन यूज करेंगे, एट्रोपिन विल कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो एट्रोपिन जब आइज में डालते हैं तो प्यूपिल का क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन। तो ये, है ना, 0.5% एट्रोपिन causes the constriction of pupil in the humans, है ना। but rabbits can bear up to 1 to 2%, rabbit में 1 to 2% एट्रोपिन भी दिया तो भी pupil constriction नहीं होगा। ये क्यों, because rabbits are naturally tolerant to the atropine, ठीक है, that is known as natural tolerance, है ना। अगर आपने रिपीटेड यूज किया एट्रोपिन का इसमें आइज में, उसकी वजह से जो टॉलरेंस डेवलप हुआ उसको बोलेंगे एक्वायर्ड टॉलरेंस, राइट। नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस। नाउ स्पेसीज टॉलरेंस, स्पेसीज टॉलरेंस, तो रैबिट्स है, रैबिट में बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। तो रैबिट्स में क्या है ना, खेत में पाया जाने वाला रैबिट, है ना, बनी, आप बनी बोलते हैं, चलो हनी बनी, टेल मी समथिंग समथिंग, चलो हनी बनी। तो जो बनी होता है, जो रैबिट होता है, तो रैबिट इज ऑल्सो ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज, some are white rabbit, some are the red rabbit, some are the black and white rabbits, like that. So species, so every type of rabbit species will have a different response to the enzyme, okay? Different response to the atropine. So for example, some rabbits, they can tolerate high quantity of belladonna, high quantity of belladonna. Some rabbits can tolerate higher amount of belladonna because they will have one enzyme known as atropine esterase.
तो बेलाडोना में क्या होता है, एट्रोपिन होता है. तो सम स्पीसीज ऑफ रैबिट दे कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ एट्रोपिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिन स्टोरेज एंजाइम व्हिच कैन हाइड्रोलाइज द एट्रोपिन देन. बट है ना, बट है ना, सम रैबिट्स दे आर नॉट टॉलरेट, नोन एज स्पीसीज टॉलरेंस. जैसे मान लीजिए ब्लैक पीपल, अमेरिकन ब्लैक पीपल और आपके इंडियंस. इंडियंस में अगर 1% एट्रोपिन अगर आइज में डालेंगे तो माइड्रेसिस होगा, ठीक है. बट अगर वही 1% एट्रोपिन ब्लैक पीपल के आइज में डालेंगे तो माइड्रेसिस नहीं होगा. मीन्स ब्लैक पीपल दे आर टॉलरेंट टू द एट्रोपिन. ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल क्या है, रेस है ना, क्या है, स्पीसीज है. सो नोन एज अ स्पीसीज टॉलरेंस. क्वेश्चन आ चुका है स्पीसीज टॉलरेंस, राइट. नेक्स्ट आता है रेशियल टॉलरेंस. नेक्स्ट आता है रेशियल टॉलरेंस. रेशियल टॉलरेंस क्या होता है, रेस ना. जैसे ह्यूमंस क्या है, एक एनिमल, ह्यूमंस क्या है, एक स्पीसीज है ना. रैबिट क्या है, एक स्पीसीज है. बट रैबिट में टाइप्स है ना, तो उसको बोलते हैं रेस. ह्यूमंस है, ह्यूमंस में क्या है, रेसेस है ना, रेसिज्म. कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, लाइक दैट. तो रेशियल टॉलरेंस मतलब क्या है, तो एट्रोपिन solution when instilled into the eyes, that is conjunctival sac of Caucasian people. Now Caucasian people will produce the dilation of pupil, but Negroes में अगर डालेंगे तो dilation नहीं होगा. Okay, so atropine solution when instilled into the conjunctival sac of Caucasian people dilate the pupil, but Negroes it will not produce any dilation at all. That means what, रेशियल टॉलरेंस है ना. दोनों भी क्या है, आदमी है, दोनों भी क्या है, ह्यूमंस है. निग्रोस भी क्या है, ह्यूमंस है. कॉकेशियन पीपल भी क्या है, ह्यूमंस है. बट कॉकेशियन पीपल में एट्रोपिन डायलेशन करता है पीपल का, बट निग्रोस में नहीं करता. दैट इज नोन एज द रेशियल टॉलरेंस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द रेसेस. तो सम रेसेस आर टॉलरेंस टू द पर्टिकुलर ड्रग, दैट इज नोन एज द रेसिस है ना, रेशियल टॉलरेंस. जीपैट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका. Now there is one more tolerance known as a cross tolerance. Cross tolerance मतलब क्या है, cross tolerance. Cross मतलब क्या है ना, cross मतलब ऐसा होता है ना, तो एक ड्रग को अगर टॉलरेंस है आपको तो उसी कैटेगरी के दूसरे ड्रग को भी टॉलरेंस हो जाएगा, राइट. मतलब इफ यू आर टॉलरेंट टू द पेनिसिलिन, इफ यू आर टॉलरेंट टू द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. So if you are tolerant to the penicillin, so you may become a tolerant to the cephalosporin. आपको पेनिसिलिन का टॉलरेंस है तो सेफेलोस्पोरिन का भी टॉलरेंस हो जाएगा. ये दोनों भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. दोनों भी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. तो क्रॉस टॉलरेंस मतलब क्या है, टॉलरेंस टू द वन ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास. एग्जांपल, टॉलरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड जनरल एनेस्थेटिक. अल्कोहल को टॉलरेंस है आपका, अल्कोहल एडिक्टेड हो तो जनरल एनेस्थेटिक को भी क्या है, टॉलरेंस होगा, तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, राइट. तो टॉलरेंस टू द एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बोला है, इफ यू आर टॉलरेंट टू द पेनिसिलिन्स तो यू आर आल्सो टॉलरेंट टू द सेफेलोस्पोरिन्स बिकॉज बोथ आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. टॉलरेंस फॉर वन ग्रुप और सिमिलर ड्रग्स नोन एज अ क्रॉस टॉलरेंस, नोन एज अ क्रॉस टॉलरेंस. ये टर्म आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है. तो टॉलरेंस टू वन ग्रुप ऑफ ड्रग यू विल बिकम अ टॉलरेंट टू सिमिलर लुकिंग ड्रग्स, है ना. जैसे अल्कोहल का टॉलरेंस है आपको तो यू विल बिकम टॉलरेंट टू द जनरल एनेस्थेटिक लाइक ईथर. ईथर एंड अल्कोहल में ज़्यादा फर्क नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है. इनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, ईथर एंड अल्कोहल. So if you are tolerant to alcohol, you are also tolerant to ether. If you are tolerant to one antibiotic penicillin, so you may become tolerant to the cephalosporin. That is known as a cross tolerance. That is known as a cross tolerance. Next आता है tachyphylaxis. और इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन. tachyphylaxis इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना. What is tachyphylaxis? Normally टॉलरेंस टू डेवलप ए ड्रग. नॉर्मली टॉलरेंस कब डेवलप होता है, आपने रिपीटेड यूज किया ड्रग का. सो इफ यू यूज ड्रग रिपीटेडली, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको आज पिलाई, क्या पिलाई, दारू पिलाई. जैसे आज आपको पिलाई 30 ml, है ना. जैसे आपको पिलाई 30 ml, तो आपको क्या होगा, आप झूम उठे. 30 ml में आपका टुल हो गया. 30 ml दारू पिया, आज टुल हो गए, ठीक है.
अगर आपने है ना, आपने 2-4 बार 30 ml पी ली तो आपको 30 ml से कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 60 ml। जब आप 60 ml पियेंगे तब आप टू लोगे, मतलब फर्स्ट टाइम आपने 30 ml पी तो आप टू लोगे, है ना। नेक्स्ट टाइम 10-12 दिन के बाद में 10-12 दिन 30 ml पी लिया आपने, बाद में 30 ml से कुछ नहीं होगा, आपको तो 60 ml लगा, है ना, वो टू लो जाए। बट 60 ml आपने आप कुछ टाइम तक पी लिए तो 60 ml से कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 90 ml, आपको लगेगा 90 ml, है ना। 90 ml में आप टू लो जाओगे, 90 ml कुछ दिन पी लिए आपने तो 90 ml से भी कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा 120 ml, 120 ml में आपको टू लो जाए। मतलब क्या, टू गेट a desired pharmacological effect if dose is increasing, so that means you are becoming tolerant, है ना। now tolerance to develop takes time, भी ये टॉलरेंस डेवलप हो रहा है लेकिन उसमें टाइम लग रहा है ना। कुछ दिन तक आपने 30 ml अल्कोहल ले लिया तो आपको इफेक्ट मिला, कुछ दिन तक आपने 60 ले लिया तो इफेक्ट मिला, है ना, कुछ दिन तक 90 ले लिया तो इफेक्ट मिला, मतलब डोज बढ़ रहा है लेकिन टाइम भी लग रहा है, नोन एज अ, है ना। सो टॉलरेंस टू डेवलप टेक्स टाइम, ये टॉलरेंस डेवलप के लिए टाइम लगता है। तो नॉर्मली टॉलरेंस टू डेवलप टू ए ड्रग टेक्स टाइम, बट there are some examples of drug which develop a rapid tolerance. There are some examples of drug which develop a tolerance within a few minutes. Within a few minutes. So certain drugs can develop tolerance within a few minutes. है ना? Normally it takes time to develop tolerance. Okay? But few drugs develop a tolerance in a rapid manner, in a rapid tolerance. That is known as rapid tolerance. है ना? Examples of drug like ephedrine, है ना? Then tyramine, then amphetamine, then pyridoxytiptamine. So tolerance to develop a drug normally takes a time, but there are few drugs which develop a rapid tolerance. Example is ephedrine, tyramine, amphetamine, pyridoxytiptamine. So such kind of rapid tolerance is known as the tachyphylaxis. Such kind of rapid tolerance is known as the tachyphylaxis. जो रैपिड टॉलरेंस उसको tachyphylaxis बोलते हैं, है ना। तो इसके ऊपर कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जाम्पल भी पूछा है, एग्जाम्पल याद रखो, ephedrine, tyramine, amphetamine, है ना, pyridoxytiptamine. So amphetamine, ephedrine, tyramine, pyridoxytiptamine. So these kind of drugs they can develop tolerance within a few minutes, within a few doses. So that is known as tachyphylaxis. Normally tolerance to develop takes time, है ना। आज आपने 30 ml शुरू किया, है ना, बाद में 30 ml से कुछ 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 महीने के बाद में 30 ml से 60 ml गए, 60 ml से कुछ नहीं हो रहा अभी आपको, है ना, बाद में आप 90 ml ले रहे हो, है ना, कुछ दिन के बाद आपको 120 ml लगा, इतने बेवड़े बन जाओगे कि कुछ दिन में आपको एक क्वार्टर से कुछ नहीं होगा, है ना, इतने बेवड़े बन जाएंगे पूरी बॉटल खाली करोगे। मतलब क्या, टॉलरेंस टू डेवलप टेक्स टाइम, है ना, बट देर आर सम ड्रग्स which develop a tolerance in a rapid way, which develop a tolerance in a minutes also. Example, ephedrine, tyramine, amphetamine, tryptamine. So that type of tolerance, rapid tolerance, quick tolerance is known as a tachyphylaxis. I hope you are getting. समझ रहा है आपको? If you are getting, please write yes in the comment box. I hope you are getting, है ना? I hope you are getting. अगर समझ रहा है तो yes लिखिए कमेंट बॉक्स में। Next part is a combination of drugs. Combination of drugs. When you are using combined drug, combine कब कर रहे हो? So you are using two drugs in the combination. Why? For a different purpose. So if two drugs are combined together and they are giving their their effect, which is a summation of the individual effect. So वो term को बोलते हैं अपन additive. So what do you mean by additive effect? What do you mean by additive effect? What do you mean by synergistic effect? So additive effect means what? When two drugs are combined together and their final pharmacological response is a summation of their individual response. So that is known as a additive effect or summation effect. मतलब क्या है ना, मतलब क्या, suppose you have two drugs, drug A and drug B. So drug A gives you a pharmacological effect known as a 1. Drug B will give you a pharmacological effect known as a 1. When drug A and drug B, so A drug A, drug A,
ए ड्रग जो है आपका, ए ड्रग्स है ना, ए ड्रग जो है आपका वो आपको एक इफेक्ट देता है, ड्रग ए विल गिव यू वन इफेक्ट, give you one effect, drug B will give you one effect, B give you one effect. So individual effect is a one and one. So if they are combined together and their final effect is a two, that is nothing but the summation of their individual effect known as a additive effect. दो ड्रग साथ में दिए, एक ड्रग का इफेक्ट है वन, एक ड्रग का इफेक्ट है वन, दोनों का एडिशन करके बना टू. तो इफ द फाइनल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी is a addition, is a summation, then it is known as additive effect. It is known as additive effect. Next term होता है आपका, next term is nothing but the very important, known as a synergistic effect. additive effect का example देखो, additive effect का example है आपका, तो paracetamol and aspirin they are combined together for the headache, है ना, to get a additive effect. Next term आता है आपका synergistic effect. okay? Synergistic effect वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिनर्जिज्म मतलब क्या है, टू सपोर्ट, टू एनहांस, टू प्रमोट, है ना. टू सिनर्जिज्म मतलब क्या है, टू ओके. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या, एक ड्रग है, ड्रग ए, दूसरा ड्रग है ड्रग बी, दे आर कंबाइंड टुगेदर, है ना, है ना. आफ्टर कॉम्बिनेशन दे गिव्स इफेक्ट व्हिच इज मोर देन द समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट. मान लीजिए यहाँ पे ए ड्रग है, यहाँ पे बी ड्रग है, so drug A will give you effect known as 2, drug B will give you 2 effect. So 2 plus 2 normally should be 4, है ना, but their total response is a 5. drug A का response है 2, drug B का response है 2, लेकिन उन दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स मिलता है 5. मतलब क्या कर रहे हैं, drug A and drug B they are promoting themselves, है ना. तो total response of two drugs when it is a more than summation, so there is a facilitation of pharmacological response, there is a facilitation of pharmacological response by combined use of two drugs, so that is known as a synergistic effect. okay, synergistic effect मतलब क्या, when two drugs are given together, when their individual effect is more than, when the total effect is more than their individual effect, known as a synergistic effect. And they are also known as a supra additive combination, they are also known as supra additive combination. इनको अपन क्या बोलते हैं, supra additive drugs. तो एग्जांपल देखो, additive effect के एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, राइट, एज ए एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक. individual nitric oxide and halogen, they are the anesthetic agent, so as anesthetic. additive effect, amlodipine and atenolol for the hypertension, they has additive effect. Nimekinamide and metformin, ये क्या है, anti diabetic drugs है, so to decrease the blood sugar level, they are additive effect. Ephedrine and theophylline as a bronchodilator, as a additive effect. Now why we are combining this drug, we are combining this drug to prevent the tolerance, we are combining this drug to prevent the tolerance, to prevent the resistance to a, है ना. अगर दो एंटीबायोटिक कंबाइन करें उसका रीजन है कि टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस, दो ड्रग कंबाइन करें उसका रीजन क्या है कि टू प्रिवेंट द टॉलरेंस, सो एडिटिव इफेक्ट, राइट, ये है एडिटिव इफेक्ट. नाउ समेशन और नाउ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. एग्जांपल्स ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं जीपैट में. सो एग्जांपल ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, 2 + 2 5. सो व्हेन इंडिविजुअल ड्रग एज अ रिस्पॉन्स and the final response after combination is more than the individual response, है ना, more than the summation of individual response, that is known as the additive effect, that is known as the synergistic effect. अगर दो ड्रग का फाइनल रिस्पॉन्स उनका इंडिविजुअल इफेक्ट का एडिशन है तो एडिटिव इफेक्ट, अगर दो ड्रग का रिस्पॉन्स फाइनल रिस्पॉन्स इंडिविजुअल ड्रग के एडिशन से जाता है तो बोलेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, राइट. तो सुप्रा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन, राइट. सो हियर यू कैन से, so synergistic effect. So for the synergism, acetylcholine, physostigmine, so both are the cholinergic drugs, they inhibit the breakdown, okay, so they are used. इससे physostigmine क्या है, physostigmine is a reversible anticholinergic inhibitor. मतलब acetylcholine क्या करता है, acetylcholine उसका काम करेगा, but physostigmine क्या है,
एसिटिल कोलिन मेटाबोलाइज होता है किससे, कोलिन स्ट्रेस से, तो एसिटिल कोलिन इज मेटाबोलाइज बाय कोलिन स्ट्रेस एंजाइम एंड फार्मास्यूटिकल इज व्हाट, फार्मास्यूटिकल इज एंटी कोलिन स्ट्रेस, so it will limit the acetylcholine stress and prevent the metabolism of acetylcholine so that the action of acetylcholine will be more, right? That is a potentiation of action of acetylcholine by pharmaceutical. So that is a superadditive or synergistic. So another example, levodopa, carbidopa or levodopa benzoyl. So levodopa क्या है, प्रोड्रग है, कार्बिडोपा क्या है, ड्रग यूज इन द पार्किंसनिज्म. levodopa, carbidopa ये तीनों ड्रग क्या है, पार्किंसनिज्म में यूज किया जाता है. But what happens when levodopa is given, most of the levodopa is metabolized in the blood only by the dopa decarboxylase enzyme, peripheral dopa decarboxylase enzyme. Now what is carbidopa? Carbidopa is a drug which inhibits the dopa decarboxylase enzyme and prevents the metabolism of levodopa, so that levodopa will go in the brain in a higher amount and there will serve its function. So inhibition of peripheral metabolism of levodopa by benzoyl and carbidopa. तो सुपरएडिटिव कॉम्बिनेशन और सिनर्जिस्टिक. नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लियर करके मैं बोलता हूँ. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, है ना, आपको समझ रहा है. इफ यस प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स. नाउ थर्ड एग्जांपल देखो, सुपरएडिटिव कॉम्बिनेशन, है ना. एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपको बिलीव नहीं होगा, बट examples are very very important. Lot of questions they are asking from this. So for example, adrenaline and cocaine. So what is adrenaline? Adrenaline is a neurotransmitter. It will act on its alpha and beta receptor. What is cocaine? What is desipramine? So cocaine, desipramine, they are known as a reuptake inhibitor. They inhibit the reuptake of noradrenaline. They basically increases the level of noradrenaline, adrenaline, right? So they are facilitating the response of adrenaline by inhibiting the reuptake in the neuron. That's why they are superactive or synergistic. और एक एग्जांपल है आपका सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिन. So they are nothing but sulfonamides. So sulfamethoxazole will prevent the formation of folic acid by inhibiting the folic acid synthesis enzyme. Trimethoprim will inhibit the dihydrofolate reductase enzyme. So there is a sequential blockage of the folic acid synthesis. Remember, ये जो combination है, this was the first classical example of synergistic effect. This was the first classical example of synergistic effect. सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन, ये कॉम्बिनेशन. ओके, लास्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक इनाप्रिल प्लस हाइड्रोक्लोरोथायराइड. तो दे आर कंबाइंड टुगेदर टू गेट अ मोर देन इंडिविजुअल इफेक्ट. मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखो एडिटिव इफेक्ट मतलब क्या, ड्रग ए आपको एक इफेक्ट देता है, ड्रग बी आपको एक इफेक्ट देता है, वो साथ में देंगे तो उनका टोटल इंडिविजुअल इफेक्ट कितना होगा, 2, है ना. दैट इज एडिटिव इफेक्ट. आपका एक ड्रग है जो 2 इफेक्ट देता है, दूसरा ड्रग है जो 2 इफेक्ट देता है, बट ये जब साथ में देंगे तो टोटल इफेक्ट कितना मिलेगा आपको, 5. मीन्स पोटेंशिएशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फैसिलिटेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय वन ड्रग, है ना, one drug when they are combined together. So we are going to get a response more than the summation of their response. That type of combination is known as synergistic combination or supra-additive combination. I hope you have got clear. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका. नेक्स्ट है ना, एग्जाम्पल देखो, कोडीन एंड एस्पिरिन फॉर पेन, सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन फॉर द, है ना, फॉर द इन्फेक्शन, राइट. नेक्स्ट पार्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइजनिंग एंड एंटीडोट. ठीक है, पॉइजनिंग एंड जितना अभी 5 days में नहीं था तो उसका सब कवर अप करना है आपको, है ना, अपने को कवर अप करना है. तो डेली 2 hours सेशन होगा आपका. एंटीडोट फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन पॉइजनिंग. तो जैसे बोला है मैंने, व्हेन नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन, व्हेन नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन, सो मोस्टली यूनिवर्सल एंटीडोट इज यूज्ड, बट there are specific antidote for particular type of poisoning and it is very very important. एक ही चार्ट है आपका, ये चार्ट में से कम 10 या 15 बार क्वेश्चन आ चुका.
minimum 10 to 15 times question has been asked from this chart. So I have compiled all the poisons and their antidote. ठीक है, देखो most of the time if you don't know the nature of poison, you have to use universal antidote. But if the nature of poison is known, then you have to use particular antidote. जैसे for example, if you got poisoning due to paracetamol, paracetamol का poisoning जल्दी होता नहीं है, because in a normal therapeutic dose, paracetamol will not cause poisoning. So if you got a poisoning due to paracetamol, when you will get poisoning, remember what is the toxic dose of paracetamol. If you use paracetamol beyond the 6 gram per day, 6 gram per day, 6 gram, 6 gram per day. If you take a paracetamol 6 gram per day, normal dose होता है उसका, what is the normal dose? 500 milligram to 1 gram, है ना, मैक्सिमम 2 ग्राम तक. नॉर्मली पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, एक बार देंगे या दो ना, जैसे 650 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, कितना हो गया आपका, है ना, 1.2 ग्राम. तो दैट पैरासिटामोल विल नॉट कॉज पॉइजनिंग. बट इफ यू टेक पैरासिटामोल बियॉन्ड 5 ग्राम 6 ग्राम पर डे, तो दैट विल डेफिनेटली कॉज पॉइजनिंग. एंड if you got a poisoning due to paracetamol, what is the antidote? So antidote is nothing but the N-acetylcysteine. Antidote क्या है भाई? N-acetylcysteine. तो paracetamol का poisoning हो गया आपको, तो antidote is nothing but the N-acetylcysteine. That is the first antidote. Most of the books में क्या है? N-acetylcysteine ये antidote दिया है ना. Most of the books they are given the N-acetylcysteine. और बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, but अनदर एंटीडोट क्या है ये किसी को मालूम नहीं है ना. ये सिर्फ एक दो बुक में दिया है और मैंने वो अपने स्लाइड्स में दिया है. तो एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग N-acetylcysteine और अनदर एंटीडोट इज मेथोनिन. बोथ आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. व्हेन वी विल डिस्कस द NSAID एट दैट टाइम अगेन आई विल एक्सप्लेन यू इन द डिटेल, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द पॉइजनिंग ड्यू टू पैरासिटामोल. But you have to understand what is antidote for paracetamol, N-acetylcysteine and methionine. और ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा, कम से कम 3-4 बार GPAT नाइपर DI फार्मेसी में पूछा, कम से कम 3 या 4 बार. राइट. तो नेक्स्ट इज अ मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड कॉपर. ये सब क्या है? मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कॉपर, ऑल दे आर नथिंग बट द हेवी मेटल्स. ये क्या है? हेवी मेटल्स. Arsenic, mercury, copper, they are the heavy metals. So in this case there is an antidote known as a बाल. बाल मतलब क्या? बाल की खाल में. बाल क्या होता है? ब्रिटिश अमाइनो लेविसाइड. ब्रिटिश अमाइनो लेविसाइड. ठीक है. तो बाल इज नथिंग बट द ए चिलेटर. ये क्या है? एक कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स. ये चिलेट करता है. किसको चिलेट करता है भाई? हेवी मेटल्स को. Mercury, arsenic, copper. If you got a poisoning due to mercury, arsenic or copper, so antidote is nothing but the बाल. कौन सा बाल? बाल की खाल नहीं. बाल मतलब क्या? British amino levisate. It is also known as dimercaprol. Also known as a dimercaprol. आपको मालूम नहीं तो लिख के लेना है. Dimercaprol. तो बाल और dimercaprol is a antidote for mercury, arsenic and copper. है ना. नेक्स्ट देखो एट्रोपिन. नेक्स्ट क्या है? एट्रोपिन. एट्रोपिन एंड ऑल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? फाइसोस्टिग्माइन. फाइसोस्टिग्माइन देखो इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. एक बार समझ लो, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना. सो व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग? So if you got poisoning due to atropine or anticholinergic drugs, so antidote is nothing but the फाइसोस्टिग्माइन. फाइसोस्टिग्माइन व्हाट इज दैट? इट इज अ कोलिनेस्टरेज, है ना. फाइसोस्टिग्माइन इज अ, है ना, ये क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग है. ये क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है. फाइसोस्टिग्माइन इज अ कोलिनर्जिक ड्रग. एट्रोपिन एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या है? एंटी कोलिनर्जिक, है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग अगर होगा, इफ यू गॉट पॉइजनिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एंटीडोट इज ऑक्सीजन. इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, अभी साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. Again 3 to 4 times question has been asked. What is the antidote for cyanide? तो cyanide poisoning के लिए एंटीडोट होता है डायकोबल DA, बट आजकल यूज नहीं करते, बट अमाइल नाइट्रेट यूज करते हैं. अमाइल नाइट्रेट इज एंटीडोट फॉर साइनाइड.
then followed by sodium nitrite and sodium thiazide. So if you got poisoning due to cyanide, ये cyanide poisoning अगर पढ़ाना है तो उसके लिए कम से कम है ना उसमें ही 1 hour जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है. So if you want to learn the cyanide poisoning, I will make a separate video on cyanide poisoning. Okay? Then dicobalt EDTA, ये क्या है? ये चिल्टिंग एजेंट है. अमाइल नाइट्रेट followed by sodium nitrate and sodium thiazide. They are known as a specific antidote for cyanide poisoning. ठीक है. If you got poisoning due to methanol, है ना, कि मिथेनॉल का पॉइजनिंग क्यों होता है? मिथेनॉल तो अपन लेते नहीं है ना, तो ड्रिंक करने के लिए क्या लेते हैं? इथाइल अल्कोहल. तो इथेनॉल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. सो मिथेनॉल इज नॉट यूज्ड, बट समटाइम्स यू गॉट अ पॉइजनिंग ड्यू टू मिथेनॉल. क्यों? आपने एक न्यूज देखा होगा, है ना, आपने न्यूज देखा होगा क्या? गावठी दारू पिल्याने 10 लोकांचा मृत्यू, है ना. तसे बी त्यांचा काही उपयोग नव्हता आपल्या सोसायटीसाठी, पण ते मेले, है ना. 10 लोक गावठी दारू पिल्याने मृत्यू झाला. कशामुळे झाला? क्योंकि गावठी दारू में क्या होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस इथेनॉल इज जनरेटेड, but along with that some amount of methanol is generated, and methanol is a poisonous to human consumption. Ethanol, it can be metabolized, it can be removed. Methanol is also metabolized, can be removed, but the metabolites generated in the methanol metabolism, so they are toxic to our body, and that's why in a raw alcohol, not purified alcohol, there is sometimes methanol. So methanol causes the poisoning. So what is the antidote then? In case of methanol poisoning, ethylene glycol poisoning. यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. In case of methanol poisoning, ethanol can be used as antidote due to ethanol is a competitive inhibitor of methanol. Okay? Then in case of specific antidote, there is a 4-methylpyrazole. 4-methylpyrazole, also known as है ना, 4-methylpyrazole, also known as a fomepizole. क्या मानते हैं इसको? fomepizole. यहाँ पे लिखा दो. So in case of methanol poisoning, in case of ethylene glycol poisoning, in case of methanol poisoning, in case of ethylene glycol poisoning, whole methylpyrazole, also known as a fomepizole, is an antidote. In case of methanol poisoning, ethanol can be used as antidote because they are the competitive, they are having structural similarity. They will compete for the alcohol dehydrogenase. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका लीड पॉइजनिंग. क्या भाई? लीड पॉइजनिंग. तो व्हाट इज द एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग? तो कैल्शियम डाइसोडियम EDTA और डायमार्केप्टोसक्सिनिक एसिड. तो लीड के लिए क्या है एंटीडोट? डायमार्केप्टोसक्सिनिक एसिड और कैल्शियम EDTA, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, है ना, लीड पॉइजनिंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है नाइट्राइल. तो नाइट्राइल का पॉइजनिंग हुआ है तो मिथिलीन ब्लू इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट. देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ चुका है. ओपाइडल पॉइजनिंग, अगर आपको मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम, इनका पॉइजनिंग हुआ है तो व्हाट इज द एंटीडोट? तो दिस इज द एंटीडोट. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. नैलोक्सोन. ओपाइड पॉइजनिंग, इफ यू गॉट अ पॉइजनिंग ड्यू टू ओपाइड एनाल्जेसिक्स, तो नैलोक्सोन, नैल्ट्रैक्सोन, नाल्बुपेन, देयर आर 3 एंटीडोट, है ना. यहाँ पे देखो नैलोक्सोन एक हो गया, नैल्ट्रैक्सोन दूसरा हो गया, तीसरा है नाल्बुपेन. नैलोक्सोन, नैल्ट्रैक्सोन एंड नाल्बुपेन, दे आर द एंटीडोट फॉर ओपाइडल पॉइजनिंग. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है आपका बेंजोडाइजिपिन, है ना, डाइजिपाम वगैरह ड्रग. तो इन केस ऑफ बेंजोडाइजिपिन, व्हाट इज एंटीडोट? फ्लूमाजिनिल. इसके ऊपर भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. फ्लूमाजिनिल इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग. थर्ड नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और इसको आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग. इफ देयर इज अ पॉइजनिंग ड्यू टू, है ना, ड्यू टू पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट, व्हाट इज द एंटीडोट? तो एंटीडोट इज अ प्रेलिडोक्सिन. सो प्रेलिडोक्सिन इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम क्या करता है, अपन देखेंगे when we'll see the drug acting on CANS. So at that time I will explain you cholinergic drugs, and in that I will explain you pralidoxine or 2 form.
तो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज फॉस्फेट पॉइजनिंग एट्रोपिन और पैराडॉक्सिन इज एंटीडोट। ठीक है, क्वेश्चन 2-4 बार उसके ऊपर भी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज हिपेरिन। तो इफ यू गॉट पॉइजनिंग ड्यू टू हिपेरिन और ओवरडोज ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन क्या है? हिपेरिन इज एंटीकोगुलेंट। सो हिपेरिन इज एंटीकोगुलेंट, सो एंटीडोट इज नथिंग बट द प्रोटामाइन सल्फेट। इसके ऊपर भी कम से कम 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। So when we'll see anticoagulant, at that time I will explain how protamine sulfate will prevent the poisoning of heparin. Okay? यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कर सकता हूँ लेकिन समझ में आया आपको। ठीक है, आपको मालूम नहीं ना। तो हिपेरिन इज एंटीडोट फॉर, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंट सभी, मतलब मैंने पहले ही जैसे स्लाइड ओपन किया उस टाइम पे बोलता कम से कम 10-12 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस स्लाइड, तो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नथिंग बट द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में क्या आता है? इमिप्रामाइन है ना, डिसिप्रामाइन, अमीट्रिप्लिन, इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, अमीट्रिप्लिन, ये ड्रग्स आते हैं, अमीट्रिप्लिन, इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, तो सबको बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। तो इन दैट पॉइजनिंग, इन दैट टॉक्सिसिटी, you have to use sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is an antidote for tricyclic antidepressant, as well as it is an antidote for aspirin poisoning. Sodium bicarbonate aspirin poisoning में भी एंटीडोट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ये मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन मतलब साइनाइड पॉइजनिंग में ये मिथिलीन को यूज करते हैं। मिथिलीन ग्लाइकोल का आपने ऑलरेडी देखा है, मिथेनॉल को ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट इज आयरन पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग ड्यू टू फेरस। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, आयरन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन विथ, क्या पूछा है? आयरन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन विथ द अडल्ट। ऑप्शन ए अडल्ट, ऑप्शन बी चिल्ड्रंस, ऑप्शन सी ओल्ड पीपल मतलब जेडियाट्रिक पेशेंट। इसमें होता है आयरन पॉइजनिंग कॉमनली। सो रिमेंबर आयरन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रंस। आयरन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रंस। क्यों होता है भाई आयरन पॉइजनिंग चिल्ड्रंस में? आयरन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रंस। व्हाई? देयर इज वन रीजन। देखो, अगर कोई माता जी है ना, जिनके पेट में फिटस है, इफ एनी प्रेग्नेंट लेडी इज देयर, शी हैज अ फिटस इन देयर वूम, लेकिन उनको पहले भी एक क्या है, एक बच्चा है, जैसे 4 साल का 5 साल का एक बच्चा है, उनको और एक बच्चा होने वाला है। तो if pregnant woman is there, so what happens? So she is supplied with the iron plus folic acid. आयरन का टैबलेट उनको चल रहा है, फेरस का टैबलेट उनको चल रहा है, फेरस है ना, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस एस्कॉर्बिट, तो इनका टैबलेट चल रहा है। नाउ दिस टैबलेट विल लुक लाइक अ चॉकलेट, है ना। इनका जो टैबलेट है एक है ना ब्राउन कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो इनका जो स्ट्रिप होता है टैबलेट का, वो गोली जैसे दिखता है, मतलब वो टॉफी जैसे दिखता है ना। बच्चों को टॉफी पसंद है, तो वो बच्चे को क्या मालूम ये दवाई है या फिर चॉकलेट है, वो 10-12 टैबलेट खा लेता है। ओके, दैट्स व्हाई आयरन पॉइजनिंग इज वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रंस। व्हाई? बिकॉज आयरन और फेरस टैबलेट विल लुक लाइक अ कैंडीज, लुक लाइक अ चॉकलेट्स। दैट्स व्हाई आयरन पॉइजनिंग इज वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रंस, राइट। ये आपको कब पता चलेगा? इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ता है, तब मालूम है ना। So in the children iron poisoning is a common, okay, and that okay. Now in case of iron poisoning, what is the antidote? Desferazomine. Desferazomine is iron chelator. फेरस आयरन को चिलेट करता है ना, तो desferazomine is iron chelator, right? नेक्स्ट आता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल कम करता है। तो व्हाट इज एंटीडोट फॉर इंसुलिन? ग्लूकोज। किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन ज्यादा दे दिया, उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, उसको इमीडिएटली ग्लूकोज दे दो, ओरली दे दो, टाइम लगेगा, या फिर इंट्रावेनसली दे दो इमीडिएटली। तो एंटीडोट फॉर इंसुलिन ग्लूकोज। एंटीडोट फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए एंटीडोट क्या है? कैल्शियम इटसेल्फ इज एंटीडोट, ग्लूकागॉन इटसेल्फ इज एंटीडोट, इंसुलिन इज आल्सो। इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग, बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग हो गया, इन दैट केस फाइसोस्टिकमिन इज एंटीडोट। क्वेश्चन आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पॉइजनिंग हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एंटीडोट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अपन ने देखा है ये
एंटी कैंसर ड्रग में मिथोट्रिक्सेट का पॉइजनिंग हो गया, व्हाट इज द एंटीडोट? ल्यूकोवेरिन। ल्यूकोवेरिन मतलब क्या है? इट इज नोन एज द ल्यूकोवेरिन सिट्रोग्राम फैक्टर, आल्सो नोन एज द पॉइजनिक एसिड. When we was discussing about the anti-cancer drug, I have told you in the details how methotrexate toxicity is there, how there can be prevented by folic acid or fulvic acid. ये already देखा है. Okay, so anti है ना, coumarin anticoagulant. If you got poisoning overdose of coumarin anticoagulant, what is the antidote? Vitamin K. Now when we will see anticoagulant chapter, at the time I will explain this. So just a single chart है ना, पॉइजनिंग एट है ना, पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट. तो अभी जो रिसेंटली DI का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसके ऊपर ये चार्ट में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम सिंगल चार्ट इन द DI एग्जाम. और GPAT नाइपर में तो बहुत बार पूछे मैंने, जैसे बोला है 10-12 बार. दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट बाय इनिंग. ठीक है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो डिफरेंट ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट है ना. जैसे है ना, so drugs will affect the particular organ. जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिवर, नोन एज द हिपेटॉक्सिटी. कौन से ड्रग है हिपेटॉक्सिक? तो दीज ड्रग्स आर हिपेटॉक्सिक, जैसे आइसोनियाजाइड, पायरिजनामाइड, पैरासिटामोल, क्लोरोफोर्मेजिन, 6 मार्केप्टोपिरिन, हैलोथेन, इथेनॉल, इनल्बेडाजोल. तो देखो आइसोनियाजाइड, पायरिजनामाइड क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है. पैरासिटामोल एनएसआईडी है. क्लोरोफोर्मेजिन एंटीसाइकोटिक है. 6 मार्केप्टोपिरिन एंटी कैंसर है. हैलोथेन है ना आपका ये जनरल एनेस्थेटिक. So these kind of drugs, they adversely affect the liver and they have liver toxicity. Liver toxicity is by these drugs है ना. नेफ्रोटॉक्सिटी किसको है? नेफ्रो मतलब किडनी, किडनी टॉक्सिटी कितने है ना. मोस्ट ऑफ द एनएसआईडी जो होता है जैसे एनालिसिक एंटीबायोटिक, इनको हिपेटॉक्सिक भी होता है, इनको किडनी टॉक्सिटी. आपने देखा होगा आपके घर में बात करते करते जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो किडनी और लिवर खराब होगा. क्यों? बिकॉज किडनी टॉक्सिटी, लिवर टॉक्सिटी इज देयर फॉर द एनालिसिक एंटीबायोटिक्स. ठीक है. तो व्हाट आर द नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग? तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का एग्जांपल देखो यहाँ पे, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, अमाइनोग्लाइकोसाइड, साइक्लोस्पोरिन, सेफलाक्सिन, सिस्प्लाटिन. सिस्प्लाटिन के बारे में आपने देखा है ना, इट कॉजेज द है ना, इट कॉजेज द न्यू नेफ्रोटॉक्सिटी, सिस्प्लाटिन. इसके बारे में देखा है आपने. देन सेफलाक्सिन, पेनिसिलामाइन, कोल्ड और बाकी इसके बारे में अपन रेस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे. ओटोटॉक्सिटी. तो ओटोटॉक्सिटी मतलब क्या? टॉक्सिटी योर ईयर. सो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है, हिरोसेमाइड जो है, लिब्राइटिस, दे कॉजेज द ओटोक्सिटी. ऑक्यूलर टॉक्सिटी मतलब आई टॉक्सिटी. तो क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरिया. इथाम्बुटॉल जो है, इथाम्बुटॉल कॉजेज द ऑप्टिक न्यूरोपैथी, याद रखना है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इथाम्बुटॉल. क्लोरोक्विन विल कॉज रेटिनोपैथी. जीआईटी के ऊपर कौन से ड्रग टॉक्सिक है? जीआईटी के ऊपर देखो ओपाइडल, एक ओपाइड्स लाइक मॉर्फिन दैट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विल कॉज डायरिया. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर देखो टिकोक्सिन एंड डाउनोरिपिसिन. डाउनोरिपिसिन के बारे में आपने देखा है. डाउनोरिपिसिन, डॉक्सोरिपिसिन, इपिरोपिसिन, दे आर द एंटी कैंसर एंटीबायोटिक व्हिच हैज अ कार्डियोटॉक्सिसिटी. ऑफ ड्रग कॉजिंग टॉक्सिसिटी. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कौन है जो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस एसोसिएटेड बनाएंगे, जैसे एस्पिरिन, ब्लियोमाइसिन, ब्यूसल्फान है ना. ब्लियोमाइसिन एंड ब्यूसल्फान का आपने देखा है एंटी कैंसर ड्रग. व्हाट दे कॉजेज द सिस्टिक फाइब्रोसिस. हमने देखा है ब्लियोमाइसिन एंड ब्यूसल्फान, दे कॉजेज द सिस्टिक फाइब्रोसिस. मिथोट्रिक्सेट भी करता है. ठीक है. स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम के ऊपर देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड इपेरिन, दे कैन कॉज डायरेक्टली अफेक्ट द मसल सिस्टम. बिहेवियरल टॉक्सिसिटी किसका है? तो बिहेवियरल टॉक्सिसिटी इज देयर फॉर रिजर्पिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है एडवर्सली? तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आइसोनियाजाइड, इट कॉजेज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी. हैलोपेरिडोल, इथाम्बुटॉल,
न्यूरोपैथी, टॉक्सोरिबिसिन डाउन, विनक्रिस्टिन को अपन ने देखा है, विनक्रिस्टिन एज ए न्यूरोटॉक्सिटी। डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिटी किसको है, तो डॉक्सीसाइक्लिन, सल्फोनामाइड, गोल्ड, डीपेनिसिलामाइड, ये क्या है डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिटी। स्किन को टॉक्सिटी के बाद इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कौन करेगा, ऑब्वियसली डायबिटिक्स। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दे आर डन बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड डायबिटिक्स। हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिटी कौन करेगा, जो भी ड्रग्स है ना, एक प्लास्टिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटिमिया, मतलब क्या, क्लोराम्फेनिकोल, सल्फोनामाइड्स एंड जितने भी सारे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, all anti-cancer drugs are we can cause hematological toxicity. क्यों, they are the bone marrow suppressant. So anti-cancer drugs, sulfonamides, chlorpheniramine, they cause hematological toxicity. endocrine disorder कौन करेंगे, endocrine disorder जिसमें भी हार्मोन है वो करेंगे, और मिथाइल डोपा, oral contraceptives. So they are the example of drug having different toxicity. So remaining part we'll see in the evening. अभी के लिए इतना ही काफी है, remaining part we'll see in the evening. So ठीक है, I hope everybody has understood, and if yes, please write yes in the comments. If yes, please write yes in the comment box. Please write yes in the comment box. The remaining part will take in the evening. I will update in the group. ग्रुप में अपडेट करूँगा 5 या 6 बजे या फिर 7 बजे, है ना, तो इवनिंग में देंगे लेक्चर। बीच में एक यूट्यूब के लिए भी लाइव लेने वाला हूँ, उसमें भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, ठीक है। So I will take another like session in the evening. So meanwhile I am going to take one YouTube live. For that also you can video on student, they can